Hello students, this is our first unit, motion, and this is our 7th lecture. Today's topic is equations of यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यानी एक बॉडी है वो मोशन में है, कैसे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन. तो हमें उसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है. दिस टॉपिक इज सिंपली नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन. So from where this topic comes, equations of motion. See, when an object moves, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है along a straight line, किसी स्ट्रेट लाइन with uniformly accelerated, uniform acceleration, यानी इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली क्या होता जाता है? इंक्रीज हो जाता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स इफ द वेलोसिटी covered by the body or the velocity of the body increases by equal amount in equal interval of time. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के साथ इक्वली इंक्रीज होती जा रही है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. तो देन इट इज पॉसिबल टू रिलेट. तब ये पॉसिबल है रिलेट करना किस को? इट्स वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को, ओके, एट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ए सर्टेन टाइम. और जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर्ड की है, ठीक है, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू एंड वी, एंड एक्सेलरेशन इज ए एंड टाइम इज टी, बाय ए सेट ऑफ इक्वेशंस. एक सेट ऑफ इक्वेशंस से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिनोट कर सकते हैं. एंड दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो इन इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहते हैं. और क्लियर है? और टोटल 3 टाइप्स, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं. द फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. द सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड द थर्ड वन इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. नाउ लेट्स ड्राइव इट. इट मीन्स लेट्स प्रूफ इट. हम इसको प्रूफ करेंगे और ये बताएंगे क्या है इसमें, ये इक्वेशन क्या डिनोट करती है, ये इससे क्या कैलकुलेट करेंगे और इससे क्या कैलकुलेट करेंगे. लेट्स डिस्कस इट. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. दैट इज दिस इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v इज, एज वी ऑल नो दैट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम. So this relation is also known as velocity time relation. And what this relation gives? This relation gives the velocity acquired by the body in time t. यानी ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि t टाइम में कोई भी बॉडी है उसने मोशन स्टार्ट किया किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है, या रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इतना टाइम चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो दिस इज गिवन बाय द इक्वेशन फर्स्ट. ओके, सो लेट्स प्रूव इट. So let us consider a body. एक बॉडी कंसिडर करी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है. मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. ये a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है. सपोज आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई. क्लियर? इट मीन्स सपोज लेट अस ए बॉडी हैज स्टार्टेड इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u with the acceleration a, and after time t its velocity becomes v. So now from definition of acceleration, what is the acceleration? It is the change in velocity per unit time. Okay, change in means final velocity minus initial velocity and upon time. So the acceleration is denoted by a and the final velocity is v. Initial velocity is u and the time is t. Final velocity minus initial velocity upon time. So this is v minus u upon t. Now multiply this. At is equal to v minus u. This u will go through the other side. It means v is equal to u plus at. So this is our first equation of motion.
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। एंड नीचे आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। ओके, सो लेट्स सी इट अगेन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, and this relation relates with the initial velocity, final velocity to the acceleration and time. So this relation is also known as velocity time relation, इसलिए इसको velocity time relation भी कहते हैं। और ये relation क्या बताता है कि velocity acquired by the body after time t, यानी t टाइम के बाद बॉडी ने कितनी velocity acquire की। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया आपने, बॉडी कंसीडर करी। लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है। आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। So final velocity is v, initial velocity is u. So v minus u upon t, by solving, by cross multiplication and by transfer of terms, we will get v is equal to u plus at, and this is the first equation of motion. So we have proved the first equation of motion, v is equal to u plus at. What is v? Final velocity. What is u? Initial velocity plus acceleration into time. Okay, so this is the first equation in physical terms में, and this is the symbolic terms. तो इस इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, this equation, this is the short abbreviation of equation, can be used to determine the final velocity of body after moving with uniform acceleration in time t। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर मूविंग, कब, जब वो मूव कर दे, किससे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से t टाइम में। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन देयर आर फोर क्वांटिटीज v, u, a and t, फोर क्वांटिटीज। इफ एनी हाउ एनी थ्री क्वांटिटीज आर नोन, अगर इनमें से कोई भी तीन क्वांटिटी हमें पता है तो हम चौथी क्वांटिटी आसानी से इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपको वेलोसिटी पता है, टाइम पता है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पता है तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। This equation is for uniformly accelerated motion is s is equal to ut plus half at square. S distance covered by the moving body in time t, यानी कितनी डिस्टेंस कवर्ड की है उसने, u आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एंड a एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस रिलेशन गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम। यानी फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते थे कि वेलोसिटी covered by the body in time t, in a particular time t. This equation gives the distance covered by the body in time t. Okay, let's prove it. For proof, we have considered a body moving in a straight. एक बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और उसका एक्सेलरेशन a है फॉर टाइम t। t टाइम में, t टाइम तक मूव करने पर वो इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया उसने, एक्सेलरेशन क्या था उसका, a था। इट एक्वायर्स ए फाइनल वेलोसिटी v, वो फाइनल वेलोसिटी v एक्वायर करती है आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर करने के बाद। ओके, नाउ
let's write the average velocity. Average velocity, it is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. ओके, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? u and final velocity v. So this is the v average velocity. Okay, now the distance covered. Distance covered by body. So it is given by s and it is equal to average velocity into time. ये हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था कि जब एक बॉडी दो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम उसमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. और डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. एवरेज वेलोसिटी इज u plus v upon 2 and into time. Time is small t. Now from first equation of motion, there should be a difference in between this u and v. From first equation of motion we have proved v is equal to u plus at. So from first equation of motion, क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v is equal to u plus at. Okay, suppose this is equation number 1. So putting this value in equation 1, v is equal to u तो हम पुट कर दे इसमें. so s is equal to u plus इसे u plus at upon 2 and into t. Okay, this u plus u will become 2u multiplied by t, it is 2ut and plus at square and upon 2. Okay, u plus u 2u and t, this t will go to each term, यानी हर टर्म के साथ ये t आ जाएगा. पहले इसके साथ फिर इसके साथ, and after dividing by 2 we will get ut plus half at square. Okay, so this is our second equation. s is equal to ut plus half at square. और इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे? hence proved. So by this equation we can find the distance covered by the body in time t. Okay, so इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? इसमें हमने हमें जो रिलेशन चाहिए, जो इक्वेशन चाहिए, वो पोजीशन टाइम रिलेशन चाहिए. इट मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. द रिलेशन इज दिस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो हमने बॉडी कंसीडर करी. कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a फॉर टाइम t. इट एक्वायर्स अ फाइनल वेलोसिटी v. ये v वेलोसिटी इसने एक्वायर कर ली आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस. तो बस हमने क्या दो कॉन्सेप्ट लगा है, एक एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इट इज u प्लस v अपॉन 2, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी s, इट इज डिनोटेड बाय s, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो दिस विल बिकम u प्लस v by 2 into t, and we have put the value of v from first equation of motion. v is equal to u plus at. We have put v u plus at. This u plus u will become 2u. After multiplying t, it will become 2ut, and at multiplying by t will become at square upon 2. After dividing 2, this 2 will cancel out with 2, then it will become ut, and this will be half at square. So you can see this is our second equation of motion. This is our third equation of motion, position velocity relation. ये पोजीशन और वेलोसिटी में है. पहला वेलोसिटी टाइम में था, दूसरा पोजीशन टाइम में था, और तीसरा पोजीशन और वेलोसिटी. सो दिस इक्वेशन इज v square is equal to u square plus 2s. As we all know, v is final velocity, u is initial velocity, a is uniform acceleration,
and s is the distance covered by the body. Okay, so this equation gives the velocity acquired by the body in covering a distance s. यानी इस इक्वेशन से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि s डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी. फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या प्रूव कर सकते थे कि t टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या है, टाइम t के बाद, और इसमें क्या है कि s डिस्टेंस कवर करने के बाद. यानी इफ द डिस्टेंस इज गिवन देन टू कैलकुलेट द वेलोसिटी we will use this equation. If the time is given, then to calculate the velocity we will use first equation. Okay, so to prove this we don't need to consider anything. हमें कुछ भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ही प्रूव कर लेंगे. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, that is v is equal to u plus at. Okay, this is first equation of motion, v is equal to u plus at. But here the term v square, it means we have to square this equation on square in both sides. हम दोनों साइड से इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं. तो it will become v square is equal to u plus at का होल स्क्वायर. Now open it by the formula a plus b का होल स्क्वायर, that is u square plus a square t square plus 2u at. Okay, 2u at. v square is here, u square is also here, so we have to eliminate this term into 2as. So we need the term 2a, so take common 2a, it means u square plus 2a. If we take common 2a, what is left over here? From here it will be at square and plus ut. यहाँ से देखिए ए टी आपने 2a बाहर आ गया, यू टी आ गया. ओके, और यहाँ से एक a बाहर आ गया, टी स्क्वायर एच टी रहेगा. 2 यहाँ पे है नहीं तो ऑलरेडी आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला सामने आ गया, डिवाइडेशन वाला इधर. लेट्स अरेंज दिस. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ at. व्हाट इज दिस? दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, distance covered by the body. So from second equation of motion we can write s is equal to ut plus half at square. This is first equation, this is second equation. Okay, now just put the value of ut plus half at square is equal to s. So we will write from equation first and second. So v square is equal to u square plus 2as. Okay, so this is our third equation of motion. Hence proved. So with this equation we can find the final velocity of the body after covering a distance s. ठीक है, so there are three equations of motion, v is equal to u plus at. If the time is given, then to find the velocity we will use three equations are v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square is equal to u square plus 2a. Now how we will use these equations? हम इन equations का use कैसे करेंगे? If time is given, then to find the velocity we will use first equation of motion. If time is given and we are asked to find the velocity, अगर time दिया है और velocity find करनी है तो हमें first equation लगानी है. If the time is given and we are asked to find distance covered by the body, अगर time हमें given है
और डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे. एंड इफ द डिस्टेंस इज गिवन and we are asked to find the velocity, or vice versa, if velocity is given and we are asked to find the distance. अगर velocity और distance के relation के लिए पूछा है तो we will use third equation. So this is our topic, equations of uniformly accelerated motion. These are our three equations of motion. This topic has been completed. Okay.